Topic for the day is letter writing, and the subtopic is admission inquiry. So, dear students, note on the topic. Topic for the day is letter writing, and subtopic is admission inquiry. I think you are very clear about the topic, and I instruct everybody to write everything your registers, and for that keep your registers and pens with you. So I think you must have noted down the topic. Now let us start enthusiastically. So if we look at this particular writing skill, we must move stepwise. बेटा अगर हम इस स्किल को प्रॉपर वे से परफेक्शन से सीखना चाहते हैं, we must be very careful. We must learn it step by. So be careful, listen the things properly, then you must try. First and foremost point is self-address. First step, self-address. So बेटे you look at the address in the topic, you must write the same. Nobody possesses right to write the address of his or her own. यहाँ पे हम बेटे अपना एड्रेस नहीं लिखते, हमें जो एड्रेस हाईलाइट करना होता है, जो टॉपिक में दिया होता है, उसे ही हम हाईलाइट करते हैं. और one more point, very important here. If no address is given in the topic, what to do and what not to do, note down this particular. अगर एड्रेस नहीं दिया गया टॉपिक में, तब क्या करना है? फर्स्ट स्टेप के लिए यू विल हैव टू नोट. तो बेटे तब हमें क्या करना है? वी हैव टू हाईलाइट एग्जामिनेशन हॉल सिटी डैश डैश डैश. Already told you that we possess no right to highlight our own identification anywhere in our answer sheet. तो बेटे अगर टॉपिक में कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो हमें क्या लिखना है? एग्जामिनेशन हॉल सिटी. एंड देयर इज वन मोर प्रोसीजर टू हाईलाइट द सेम. तो क्या है सेकंड प्रोसीजर? यू कैन हाईलाइट हाउस नंबर डैश 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 सिटी डैश डैश. I think first step is crystal clear. So note it down, dear students. So I'm just highlighting it in nutshell. जो first step है हमारा letter writing का, you should be able to look at कि हमें बेटे यहाँ self address highlight करना होता है left corner. तो अगर बेटा एक बात already मैंने बता दिया कि अगर तो topic में address highlighted है, you just right to write that address. लेकिन एड्रेस से पहले लिखा है सपोज यू आर राम, राइट? डोंट राइट नेम हियर ऑन द टॉप. क्योंकि मैंने देखा है कि सम स्टूडेंट्स लुक एट द थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे. दे हाईलाइट द नेम. सिर्फ आपको हाउस नंबर और सिटी यू विल हैव टू हाईलाइट, और कॉलोनी और सेक्टर. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ सेल्फ एड्रेस. तो अगर एड्रेस नहीं है तो हमें क्या करना है? एक इसके लिए ये पॉइंट हम लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल सिटी डैश डैश डैश, और सेकंड हम ये लिख सकते हैं हाउस नंबर डैश 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 सिटी डैश डैश. आई थिंक फर्स्ट स्टेप ऑफ लेटर राइटिंग इज वेरी क्लियर. देयर इज नो डाउट इन दैट. Not for this particular letter only. If we want to write any formal letter, same step will be followed. I think you are able to understand up to this particular point. So यहाँ एक in addition I want to highlight one more micro point. This particular
self-address must be covered within 2 lines only. It must start from left corner. But I think you are very clear about this particular step. Then next step is leave one line. यहाँ हमें एक लाइन छोड़ना है सेल्फ एड्रेस के बाद. Then a moral responsibility is to highlight date. Never write DATE. Just write date in a straightforward way. Told you the way to write date many times. तो आपको जो सेकेंड स्टेप है डेट हाईलाइट करना if you are writing any formal letter, तो उसके लिए प्रोसीजर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. कॉन्सेप्ट के साथ मैंने प्रोसीजर यहाँ पे अनाउंस किया हुआ है. आई थिंक देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ repetition of the same. Suppose we want to highlight the date. Today is 11 December 2020. I think you are able to understand up to this particular point. DEC we are able to highlight. तो अगर हमें complete लिखना है DECEMBER, we that's right to highlight that also. Both will be correct. तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा के हाईलाइट करते हैं ना. वर्ड ना अगर कोई क्लैरिफिकेशन की फर्दर आपको जरूरत है इस कॉन्सेप्ट की, इट विल बी हाईलाइटेड. So I think you are able to understand the second step of letter writing. There is no doubt in that. After self-address, second step is to highlight date. The way of highlighting date is 11 December 2020. So you will have to mention the date of your examination. जिस दिन आपका पेपर है आपको वो डेट हाईलाइट करना है. I think there is no doubt in that. So now look at the third step. We look at the third step of formal letter writing. Should be very, very careful about the next. Leave one line. Again, left corner. We will have to highlight the things in a very different way. तो यहाँ हमें highlight करना है किनको लेटर लिख रहे हैं. We should be able to understand that particular. और किस ऑफिस के लिए हम लेटर लिख रहे हैं. यहाँ मैंने कहा कि एडमिशन इंक्वायरी के लिए हम लेटर लिखेंगे. Then you will have to look at this particular step in a very different way. तो कौन सी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो और वहां पे पब्लिक डीलिंग के लिए कौन सी पोस्ट है. You will have to highlight that particular point. Sometimes it is mentioned in the topic itself. And sometimes you people will have to invent the things by your own. I think you are very clear. Then city. वो इंस्टीट्यूट किस सिटी में है. तो जो हमारा थर्ड स्टेप है इट विल टेक 3 लाइंस. तो हमें 3 लाइंस में कवर करना है. पहले पोजीशन जिनके साथ हमने डीलिंग करना है जो कि पब्लिक रिलेशन के लिए पोस्ट है किसी भी इंस्टीट्यूट में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. और नेक्स्ट स्टेप पे उस इंस्टीट्यूट का नाम और उसके बाद सिटी. I think third step is crystal clear. There is no doubt in that. So step number 1 in self-address, very clear. Step number 2, date. And step number 3, highlighting the details of the institute where we are going to write the letter about admission inquiry. So in 3 steps के बाद I would like to look at the demonstration. यानी कि हमारा डेमोन्स्ट्रेशन साइमल्टेनियसली हाईलाइट होगा. देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे. तो अब हम पहले टॉपिक डिक्टेट करेंगे. यू शुड बी एबल टू राइट द टॉपिक. सो आई थिंक यू आर जस्ट नोटिंग डाउन नोट ऑफ द टॉपिक. तो मेन टॉपिक इज लेटर फॉर एडमिशन इंक्वायरी. Note down the topic. You are Rajni / Rahul living at E95 sector 12
E95 Sector 12 Dwarka, DWARKA dot. You read an advertisement. You read an advertisement about short-term course in computer programming, about short-term course in computer programming by Z Computer World, Pitampura, Pitampura, comma Delhi, dot. Write a letter. Write a letter for admission inquiry. I think you are very clear about the topic. Now let us start. स्टेप वाइज जो मैंने आपको बताया है, फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे पहले हम. तो फर्स्ट स्टेप में आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू लुक एट सेल्फ एड्रेस. ये डेमोन्स्ट्रेशन को आप जरा, यू मस्ट बी एबल टू लिसन एंड राइट इन अ प्रॉपर, you will be able to understand the things in a better way. Already I have announced the topic कि आपको एडमिशन लेना है शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की. कहाँ पे? जी कंप्यूटर वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली में. क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ी है इनकी कि जस्ट यू हैव रेड दैट, और उसके बाद यू आर इम्प्रेस्ड टू लुक एट दैट पर्टिकुलर advertisement, or I think you are able to look at the goodwill of or reputation of that particular organization or institute. So that is why you want to join course. तो इसके लिए क्या करना है? सेल्फ एड्रेस पे मैंने बताया था, यू आर रजनी राहुल, लिविंग एट. अब लिविंग एट में हमने सबसे पहले सेल्फ एड्रेस E95 सेक्टर 12 द्वारका. I think you are able to note it down. तो आपने फर्स्ट स्टेप जो है वो नोट डाउन कर लिया है, because already told you people that demonstration will move simultaneously for your better understanding. I think there is no doubt so far as first step of this particular demonstration of letter for admission inquiry is concerned. I think you are very clear. Now look at the next step. And date. Already I have told you 11 December 2020. So next step is we have to look at Z Computer World Pitampura. But we will have to look at this particular file. No post is highlighted here. So we have to highlight, we have to invent the post by our own. So we will be able to look at the manager. अगर कोई पोजीशन डेजिग्नेशन हाईलाइट नहीं किया होता, we will have to search out. So the manager Z Computer World, and the third line should be covered with Delhi. I think there is no doubt so far as step number 1, step number 2, and step number 3 is concerned. And you are very clear about, very clear. Now just look at the next step. Next step we will have to highlight, that is the fourth step. Leave one line. We have to look at subject. I already told you people many times, dear students, that topic should be maximum 4 to 5 words, and each and every first consonant of each and every word must be in capital with the exception of prepositions or conjunctions. So यहाँ पे we are able to look at admission inquiry.
more than enough. So only 2 words will be able to highlight the things in a very fine way. For consonant, A should be in capital, E should be in capital. I think there is no doubt so far as fourth step of letter writing is concerned, and it will be same for each and every formal letter writing. So I think you are very clear. तो हमारा जो बेटे फोर्थ स्टेप है वो सब्जेक्ट हाईलाइट करेंगे. इस सब्जेक्ट हम इस कॉन्टेक्स्ट हम जो ये लेटर लिख रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वी हैव हाईलाइटेड वेरी फाइन वे. एडमिशन इंक्वायरी इट शुड बी डबल टू आवर हैंड राइटिंग, ज्यादा बड़ा नहीं हो, but it should be double to our handwriting, or first letter of each and every consonant should be in capital with the exception of preposition and conjunction. I think you are very clear about this particular point, that is fourth step. और अगर यहाँ तो 2 words में complete हो चुका है, अगर हम इसको सब्जेक्ट किसी भी लेटर का हाईलाइट करना है, मैक्सिमम 4 to 5 words, तो उससे ज्यादा वर्ड्स एक्सटेंड नहीं करने होते. You are very clear up to this particular point. There is no doubt. Up to fourth point, you are very clear. So, I'm sure that you must have noted down each and every point in a very systematic way. Let us move for the fifth step. Fifth step is क्या होगा? Listen carefully, beta. I'm going to announce this particular step in a very systematic way. Should be able to understand. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, यानी कि जो हमारी लेटर राइटिंग का फिफ्थ स्टेप होगा, एक लाइन छोड़ देना है सब्जेक्ट के बाद. जो भी हम यानी स्टेप हाईलाइट करेंगे, उस स्टेप को कवर करने के बाद, उस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद, इट इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट लीव वन लाइन. सिंगल लाइन हर स्टेप की कंप्लीशन के बाद छोड़ना है हमें. टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. और इट्स टाइम टू हाईलाइट sixth step. What to do, what not to do, should be able to look at. But a sixth step होगा हमारा, यानी स और मैम. I think you are able to look at this particular point. It will also be in left corner. तो लेफ्ट हमारा साइड होगा, उसी साइड में ये लिखा जाएगा सर और मैम. सो यू शुड बी वेरी फॉर्मल. यू वांट टू हाईलाइट दिस रिस्पेक्टेड सर और मैम, इट कैन बी ओके, बट सर और मैम मोर देन एनफ, आई थिंक. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस फिफ्थ स्टेप, यानी सैल्यूटेशन जो फिफ्थ स्टेप है. यानी हम कंटेंट पे पहुंचने से पहले just highlighting. If you are very sure that the manager of that particular institute is sir, male, then we will highlight sir. And if you are very sure that the manager of that particular institute is ma'am, any female, we possess the right to highlight ma'am. And if we are not sure, automatically we should write both. I think there is no doubt so far as this particular concept is concerned. Fifth step, I think it is crystal clear, transparently clear. अगर आपको इसका कोई doubt है, you can make a query at any moment, dear students. Let us start the main content. Main content में क्या आएगा? It will be very easy to highlight the things. जो हमारा टॉपिक होता है बेटा, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, we are able to select the words for looking at the first paragraph of content. कोई भी अगर फॉर्मल लेटर होता है, any formal letter, we must use formal words only. And the second step is minimum 3 paragraphs are required for the completion of any letter. Any formal letter, may be formal or may be informal, you will have to write 3 paragraphs. So 3 paragraphs, how to look at the things?
First will be introductory paragraph. Introductory paragraph will highlight what? So you will be able to highlight this particular point. Look at the demonstration, then the things will be more clear. Let us start with the content of the same topic. The topic is admission inquiry. You want to take admission, short-term course, computer programming, Z Computers, Pitampura, Delhi. Let us start the content. Three paragraphs I have already told. यानी ये हम जब जो कर रहे हैं, that is take care of this particular point. तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लर्निंग स्टेज पे you should be very clear. Let's do. तो हम इसको कैसे करेंगे? We have to highlight first हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मैंने आपको बोला था. How to look at इंट्रोडक्शन क्या होगा? देखिए टॉपिक में I've told you people that you read an advertisement. आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ी है about short term course. You will have to look at this particular point in very detail. तो हम क्या हाईलाइट करेंगे? I have seen advertisement for short term computer programming advertised by your prestigious institute on 10 December 2020. I think you will be able to look at the intro part in a very decent way because board demands minimum 150 words. So you will have to highlight the word, unnecessary word नहीं होंगे, that should be very formal. तो हमने आधा तो वहीं से लिया टॉपिक में से. I've seen advertisement for short-term course, short-term computer programming course advertised by your prestigious institute on 10 December 2020. So I want to join the same. I want to join the same मतलब कि मैं इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ. You will have to highlight. तो इसी पैराग्राफ में हमें हाईलाइट करना है कि please provide relevant details. You will have to highlight this particular point. Introduction means it will give introduction from the beginning to end. कि what you want. You should be able to understand each and every point. तो हमें ऑलरेडी हमने हाईलाइट कर दिया कि हमने एडवर्टीजमेंट देखा, हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं इस कोर्स को. ऑलरेडी यू आर एबल टू लुक एट द वर्ड्स. Words must be systematized. No informal words should be used. I have already told you. अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट पैरा हमारा पॉइंट्स में होगा इस लेटर का. अगर हम एक इफेक्टिव बनाना चाहते हैं इस लेटर को, तो सेकेंड पैराग्राफ विल बी इन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स. तो हमने ऑलरेडी यहाँ तक कर लिया था कि प्लीज प्रोवाइड रिलेवेंट डिटेल्स. यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर लेना, प्लीज प्रोवाइड फॉलोइंग रिलेवेंट डिटेल्स. तो आपको फर्स्ट जो डिटेल है यू विल हैव टू लुक एट. एक पॉइंट उसके लिए कर सकते हो, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स. यानी स्टेप वाइज आपको यानी डिटेल्स मांगना है. ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कितने टाइम तक वो कोर्स चलेगा. 6 months कोर्स है, 1 year कोर्स है, 3 months कोर्स है. ड्यूरेशन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कितने
कितने टाइम तक जो प्रोग्रामिंग प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो मेन कंटेंट्स है उस कोर्स के. I think you are able to understand so far as first point is concerned. Now look at the second. Second, you will be able to highlight timings and fee structure. Timings and fee structure. It's a very important point to be asked for details before joining course. Timings, time schedule, and fee structure. And if we look at the third point, we will have to look at eligibility. Eligibility or criteria for admission. I think you are very clear about the third point जो हम relevant details में ऐड किया कि eligibility और criteria क्या है admission का. यानी eligibility होती है कि qualifications and the second criteria procedure for admission. Maybe entrance test, maybe direct entry. I think you are able to understand up to this particular point. Now look at the D point of relevant details. D point is you will have to look at number of students in every batch. You want to look at the strength of every batch. So I think you are able to understand up to this particular point. You must have noted down point number A, B, C, D. So now move for the next. E point will be take care of this particular thing. You must be able to make the systematic points because you want details, relevant details of each and every point. So before taking admission, you should be able to look at. तो हमें अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, जस्ट राइट इट डाउन. So we have done up to this particular point, that is A, B, C, D. Now E point should be you would have to look at this particular point. E में you will have to highlight facility for evening or part-time batches. For evening or part-time batches. You will have to look at this particular point, whether the facility for evening or part-time batches available or not. Now F point you will have to highlight, that is very fine point, transportation facility. Point will just inquire whether transport facility will be available or not. I think you are able to understand up to this particular point. So I think these points are more than enough for getting relevant details. F point के बाद you will have to look at the third paragraph of paper. Third paragraph में what should we do? तो हमें कंक्लूड करना है. जो थर्ड पैराग्राफ होता है हमेशा कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है. फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रो होता है, सेकंड डिटेल्स होता है, थर्ड पैराग्राफ जो लेटर का होता है किसी भी फॉर्मल लेटर का क्लोजिंग पैराग्राफ, दैट इज कंक्लूडिंग पैराग्राफ. यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. तो हमें इसको कैसे मेंशन करना है, जस्ट लुक एट highlight, close this particular letter by highlighting this particular point. Please send me a copy of prospectus
or brochure. BROCHURE. And just highlight one more sentence. We'll have to highlight this. Sending a self-addressed envelope. Sending a self-addressed envelope. You will have to adjust this particular word proper way. So you will have to highlight this particular point. You are sending self-addressed envelope for what? For just receiving prospectus. I think you are able to understand up to this particular point. So I think with this, 3 paragraphs of this particular letter are completed. आपने बेटे नोट किया होगा कोई भी इनफॉर्मल वर्ड यहाँ यूज नहीं किया गया. एवरी वर्ड इज फॉर्मल. तो उस लेकिन डिटेल्स हमें पूछनी होती है. अगर हम बहुत कम वर्ड्स में लेटर कंप्लीट करते हैं, सीबीएसई नेवर गिव्स अस प्रॉपर मार्क्स. तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. जितनी उन्होंने वर्ड लिमिट कहा है उसको फॉलो करना हो. आई थिंक यू आर वेरी क्लियर सो फार एज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कंसर्न. तो हमारा यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स कंप्लीट हो चुके हैं इनवेल्प के बाद. व्हाट शुड वी डू? नो नीड ऑफ ड्राइंग द लाइन. मैंने तो इसलिए ड्रॉ किया कि तुमको समझ आ जाए तुम बच्चों को. तो उसके बाद हमें क्या करना है? yours faithfully. Want to highlight I think thanks it is up to you, but there is no requirement for that. मैंने कहा ना कि informal word कुछ नहीं हमें यूज करना. yours faithfully. I've told you the name रजनी और राहुल. तो यहाँ पे आप अगर रजनी लेटर लिख रहे हैं तो रजनी should write the name in capital and then signature should be there. I think you are able to look at. If as Rahul you are writing this letter, write Rahul, and same procedure it should be in commas, and you should be able to highlight the signatures. I think with this, this particular letter is over. फिर भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हम लिखने के बाद उसको क्रॉस चेक करें कि कुछ गलती तो नहीं हो गया. I think you should be very careful about that. तो यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं. क्या गलती करते हैं? यहाँ सिंसियरली लिख देते हैं. फॉर्मल लेटर में सिंसियरली वर्ड कभी नहीं आता बेटा. Take care of this particular point. And I think examiner will simply cross your letter if you use sincerely word. So you should be able to variate the things. आपको लगता है कि फेथफुली भी नहीं लिखना, simply write yours and then write your name. So I think you should be very careful about this. Faithfully word जो है ये formal word है, formal. So I think you are able to understand. अगर हमारी कोई भी फेवर करता है, it is our serious moral responsibility to be faithful. अगर हमें कोई प्रोस्पेक्टस भेज रहा है, एडमिशन के लिए डिटेल्स दे रहा है, you should be able to highlight the things in a very fine. Think with this particular point, this topic is over. It's the part of your curriculum so far as this particular unit test 2 is concerned, and you should be very careful to look at the practice session of the same in a very fine way. And now it's time to look at the next. थोड़ा सा नेक्स्ट हम